So the first working was involving diodes, that was rectification. ये भी हो गया था. यार आज वाली क्लास के अंदर जो लास्ट वर्किंग है ना, ये थर्ड वाली वर्किंग आज करनी है. So this comes under the heading of AC supply. ये रह गया था, ये इंशाल्लाह आज कंप्लीट हो जाएगा. All right. So regarding the working of AC supply, तो यार थोड़ा सा थियोरेटिकल है और थोड़े से फॉर्मूलाज की भी वर्किंग है. So starting with the first thing, advantages of AC supply. जनरली दो एडवांटेजेस पूछते हैं, तो आई गेस कोई से भी दो लर्न कर लेना. यार अली मैंने भी डिसाइड नहीं किया विंटर वेकेशंस का. लेट्स सी क्या करता हूँ. ओके सो regarding the advantages of AC supply, so they are cheaper to produce, on a large scale, using the principle of electromagnetic induction. Second advantage, they can be easily transmitted over long distances using transformers. So ये तो आई थिंक मेरे साथ साथ रीड करेंगे तो आप पॉइंट्स वैसे भी फॉलो कर लोगे. हाँ उमर, मैं आपका भी रिकॉर्डिंग ऑप्शन ऑन कर देता हूँ. फिर यार उमर एक काम कर लेना कि तुम भी यार एक व्हाट्सएप लिंक बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देना. जरा चेक कर लो अगर ऑन हो गया हो तो. उमर एक्टिवेट हो गया. ठीक है. Okay, so second वाला advantage, they can be easily transmitted over long distances using transformers. Third advantage, the voltage slash current can be easily stepped up or stepped down to minimize power losses. So यार ये तो आपके तीन essential advantages आ गए. Now moving on further, AC supply का disadvantage क्या है? Essentially एक ही disadvantage है जो सबसे ज्यादा prominent है. Since AC current and voltage varies continuously, therefore this makes it difficult to do any calculations involving power. Okay, the basic disadvantage is calculations involving power are difficult to compute because the current and the voltage in an AC supply shows a continuous variation. Now, after the advantages and the disadvantage, next ये discuss करना है
कि how can we show a graphical representation for alternating currents and voltages. Now remember, um, sorry, yaar, in the previous topic of simple harmonic motion, you would probably remember कि SHM के अंदर when you are asked to construct a graph of displacement against time, when we used to draw a graph for displacement as a function of time, तो हम लोग ये करते थे कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को शो करते थे, दैट वाज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ x. हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका टाइम फ्रेम हुआ करता था. आपका स्टैंडर्ड शेप एसएचएम में अगर आपको याद हो तो वो इस तरह का बनता था. हम लोग एम्पलीट्यूड को एक्स नॉट करके रिप्रेजेंट करते थे, और जो फाइनल इक्वेशन आती थी एसएचएम के अंदर फॉर डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वो इस तरीके से लिखते थे. where x naught was the amplitude and since it's a sine function, so आपकी इक्वेशन बनती थी x is equal to x naught sin omega t. तो इसी बेसिस पर if I ask you कि आपको करंट का ग्राफ बनाना है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, आई एम श्योर यू वुड ऑल एग्री कि a graph of alternating current if constructed as a function of time will also be similar to an AC supply, kind of like this. So if I represent my peak value of current as I naught and minus I naught, then surely based on the equation of SHM, मैं इसी बेसिस के ऊपर करंट के लिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन वर्कआउट करके लिख सकता हूँ. And if you compare the terms individually speaking, then the equation representing a function of current against time should be represented as follows. So based on the idea of simple harmonic motion, we can certainly come up with an equation representing current as a function of time. In this equation, I naught, in fact, side पे लिख देता हूँ. In this equation, I naught refers to peak current, और बाकी के सारे terms तो exactly same है. Likewise, you would also appreciate if I ask you कि अगर आपको voltage के लिए graphical representation करनी है और equation suggest करनी है, similar basis पर, since alternating voltage का shape भी AC supply वाला होगा, kind of like this. So again, if I take the peak values as V naught and minus V naught, so based on that, the standard equation representing voltage as a function of time should be given in the form V is equal to V naught sine omega t. And in this case, the term V naught refers to peak voltage. ठीक है, तो ग्राफ्स बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे एसएचएम के बनते थे, और इक्वेशंस भी बिल्कुल वैसे ही वर्कआउट होती है जैसे कि आपके पास एसएचएम के अंदर हुआ करती थी. The one question that is left to be answered is the fact कि how do we perform calculations involving
AC सप्लाई। तो इसको जरा अंडरस्टैंड करना है कि हम कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए क्या करते हैं। स्टेटमेंट पहले लिख लेता हूं, फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस we use a value for current slash voltage which is known as the RMS value. The term RMS stands for root mean square value. The question does arise, what is this RMS value? ठीक है, तो आई एम श्योर यूड ऑल अप्रिशिएट AC supplies के साथ calculations करना मुश्किल है because the value of current as well as the value of voltage every instant by instant keeps on changing. So calculations perform करने के लिए we have devised a technique, that is we make use of a value which is referred to by the term RMS value. अब what is this RMS value? तो पहले इसकी definition देख लेते हैं और फिर ये देख लेते हैं कि RMS value होती कितनी है। RMS value, ये इंपॉर्टेंट है, जरा वर्डिंग्स को केयरफुली देखिएगा मैं किस तरह से फ्रेम अप कर रहा हूं। फॉर करंट और वोल्टेज इज डिफाइंड एज अ स्टेडी वैल्यू और अ कांस्टेंट वैल्यू which produces power in a circuit at the same rate as produced by the actual AC supply. अब ये रेड वाली टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? दैट इज an RMS value can be referred to as a DC equivalent for an AC supply. अगर आप मेरी ग्रीन वाली वर्डिंग को केयरफुली पढ़ें, DC equivalent for an AC supply. So what that means is the RMS value is considered to be a DC value which can be replaced as a substitute for the original AC supply. दोबारा कह रहा हूं, an RMS value can simply be referred to as a DC value which can be used as an equivalent for the original AC supply. जिसका मतलब है कि अगर आप एक सर्किट को AC सप्लाई के साथ कनेक्ट करो और दूसरे सर्किट को आप डायरेक्ट करंट के साथ सप्लाई करो, तो एक को आप AC सप्लाई दो, दूसरे को आप डायरेक्ट करंट दो, अगर दोनों सर्किट्स के अंदर इफ पावर गेट्स प्रोड्यूस्ड एट द सेम रेट
अगर दोनों सर्किट्स के अंदर if power gets produced at the same rate, then the direct current value can be referred to as the RMS value for the AC supply. ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं कि RMS value is referred to as a DC value which can be replaced as a substitute for an AC supply. Hence the term DC equivalent for an AC supply. A DC value which can be used as a replacement for the AC supply. AC का DC equivalent, और मतलब इसका क्या बनता है कि अगर आप सर्किट 1 को AC सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हो और अगर आप सर्किट 2 को डायरेक्ट करंट के साथ सप्लाई करते हो, if the two circuits keep producing power at the same rate, then the DC value or the direct current can be referred to as the RMS value for the AC supply. ठीक है, सो सिंपल टर्म्स के अंदर एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू, एक ऐसी स्टेडी वैल्यू जिसको अगर आप एसी सप्लाई की जगह रिप्लेस करेंगे तो सर्किट में प्रोड्यूस होने वाले पावर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. एंड इफ दैट वर टू बी द केस, देन दैट डायरेक्ट करंट वैल्यू will be called as the RMS value for the AC supply. ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में याद रखना हो, ये कितनी होती है ना, ये भी हम डिस्कस कर लेंगे. और अगर आपको शॉर्ट फॉर्म में लर्न करना हो तो बस इतना लर्न कर लेना, इट्स द डीसी इक्विवेलेंट फॉर एन एसी सप्लाई. और अगर आपको कंप्लीट वर्जन यूज करना है तो फिर इस तरह से लर्न कर लेना कि द आरएमएस वैल्यू फॉर करंट और वोल्टेज is defined as a steady value or a constant value which is going to produce power at the same rate as produced by the actual AC supply. Now, before I move on to कि ये वैल्यू कितनी होती है ना, before I move on to answering that question, uh, let me tell you that this concept of RMS value is actually something जो आप O levels में पढ़ के आए थे. And when I mention this, I mention this every year. And most of the students end up saying कि नहीं सर ये नाम तो हमने सुना ही नहीं था. And rightly so, ये नाम वाकई आपने नहीं सुना था. Not in so many terms. However, remember when your teacher in O levels used to ask you कि आपके घर में कितना वोल्टेज आता है, तो आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन देंगे कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा होता है. इफ आई वर टू आस्क यू कि कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक हमारे घर में हमें कितना वोल्टेज प्रोवाइड करता है. जी, देखिए मेरी स्क्रीन पे दो आंसर्स आए हैं, दोनों आंसर्स एंड दैट्स ओके फॉर मी. तीन आंसर्स आ गए, तीनों कंसिस्टेंट है. उमर ने दिया है, मोहित ने दिया, आयशा ने दिया, तीनों ने 240 240 240 दिया है. फेयर इनफ. डोंट यू थिंक कि आपका आंसर ये होना चाहिए था? मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूं, आपको बोलना ये चाहिए था कि सर हमारे घर में तो के इलेक्ट्रिक जो सप्लाई देता है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसी सप्लाई. देन यू शुड हैव सेड कि सर एसी सप्लाई का वोल्टेज तो कंटिन्यूअसली इंस्टेंट बाय इंस्टेंट चेंज करता रहता है. एंड देन फाइनली यू शुड हैव सेड कि सर सिंस द वोल्टेज कीप्स ऑन चेंजिंग, हाउ इन द वर्ल्ड कैन वी टेल यू कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है, बिकॉज वो तो एवरी इंस्टेंट पे चेंज करेगा. आपने ये सारे ड्रामेबाजियां मेरे साथ नहीं करी. आपने मुझे ये पूरी कहानी नहीं सुनाई कि हमारे घर में तो एसी सप्लाई का वोल्टेज आता है, वो वोल्टेज तो कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है, तो हाउ इन द वर्ल्ड कैन वी टेल यू कि हमारे घर में कितना वोल्टेज आ रहा है. आपने ये पूरी कहानी सुनाने के बजाय मुझे स्ट्रेट अवे 240 लिख कर दे दिया. दैट सो कॉल्ड 240 जो आपने लिखा है, विदाउट यू रियलाइजिंग और विथ यू रियलाइजिंग, दैट सो कॉल्ड 240 is what is referred to by the term RMS value. So it's not that you are not aware of this idea. The moment you quote a value for me, 240 or 220 or whatever, that automatically means at the back of your mind, you're quoting a fixed value. So what you're trying to say is, ये जो आपने 240 लिखा है ना, इस 240 का कुछ मतलब है. इस 240 का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जो घर में एक्चुअल एसी सप्लाई आ रही है, अगर हम उस एसी सप्लाई को रिप्लेस कर दें by a constant fixed value of 240 volts, then the power produced in the appliance, both with AC as well as with this steady value of 240,
the power produced in the appliances is going to remain the same. Hence, the so-called 240 volts can be referred to as the DC equivalent, the DC equivalent for an AC supply. And hence the term 240 can be called as the RMS voltage in our case. ठीक है, तो ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट, नाम ऑल्दो आपने ओ लेवल्स में नहीं किया था, बट यू आर गिवन दिस बेसिक आइडिया राइट थ्रू ओ लेवल्स कि कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए हमें फिक्स्ड वैल्यू चाहिए होती है, एंड दैट सो कॉल्ड स्टेडी वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू और फिक्स्ड वैल्यू इज रिफर्ड टू बाय द टर्म आरएमएस वैल्यू. व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप एक सर्किट को एसी सप्लाई दें और दूसरे सर्किट को ये फिक्स्ड वैल्यू दें, और अगर आप दोनों सर्किट्स को कंपेयर करें, तो अपॉन कंपैरिजन एक्सपेरिमेंटली ये बात प्रूफ होनी चाहिए है कि both circuits are going to produce power at the same rate. Only then, that steady value can be referred to as the RMS value for the AC supply. ठीक है guys? So definition मैंने बता दी है, और अब अगली चीज ये है कि ये वैल्यू होती कितनी है या इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो पहले तो जो स्टेटमेंट्स में लिख रहा हूं ना, इनकी डेरिवेशंस इज नॉट रिक्वायर्ड. तो अभी फिलहाल मैं सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज कोट कर रहा हूं. इसकी डेरिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस. अच्छा, आगे चल के कुछ डेरिवेशंस आएंगी तो वो करा दूंगा, फिलहाल तो जरूरत नहीं है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, इन केस ऑफ करंट, comma, RMS value can be obtained using the equation. ठीक है, सो करंट के लिए that RMS value, that steady constant value, which can be used as a replacement for the actual AC supply, that can be obtained using the equation I naught upon under root 2, where I naught refers to peak current. अगर आपको जज करना है ना कि करंट के केस में ये वैल्यू कितनी होती है, तो सपोज करें कि अगर आपको करंट का एक ग्राफ दिया हुआ है और इमेजिन करें कि आपको पीक करंट की वैल्यू गिवन है 10 एम्पेयर्स. So this is your actual AC supply with a peak value of 10 amperes. So if you are interested in finding out the RMS value for current for this particular supply kitni banegi, if you apply the formula, you will end up getting this answer. अगर आपको डेसिमल वर्जन में लिखना है तो इतना आ जाएगा. I think 2SF पे इतना आ जाएगा. So what this answer is telling you is अगर आप सर्किट 1 को AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और अगर आप सर्किट 2 को ये स्टेडी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं of 7.1 amperes. So if the first circuit gets an AC supply of peak value 10, whereas the second circuit, circuit 2, gets a steady value of 7.1 amperes throughout, then both circuits, when compared, both circuits are going to produce power at the same rate. ठीक है, so the first circuit which is provided within, so imagine अगर आपके पास कोई बल्ब है या कोई हीटर है जिसको आपने AC सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया, whose peak value is 10 amperes, और फिर आपके पास एक सिमिलर हीटर है जिसको आपने एक फिक्स्ड वैल्यू के साथ कनेक्ट कर लिया which amounts to 7.1 amperes. Then both circuits,
यानी कि both heaters in a certain fixed amount of time are going to produce the exact same amount of heat energy. Only then we can say that the value obtained in circuit 2 can be known as the RMS value for the actual AC supply. ठीक है? Hussein ने लिखा है, so the power produced is exactly the same or they are almost the same. No, the power produced is exactly the same in the second circuit when compared with the first circuit. Only then we can say that the steady value of 7.1 amperes can be referred to as the RMS value of the actual AC supply whose peak current was 10 amperes. ठीक है guys? अच्छा, काफी स्टूडेंट्स को इसको डेसिमल्स में लिखना कन्वीनियंट लगता है. So what I've seen many students doing is कि वो 1 upon under root 2 को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. और मैथमेटिकली स्पीकिंग 1 upon under root 2 turns out to be 0.71, which is actually 71%. इसीलिए अगर आप में से किसी को लर्न करना कन्वीनियंट लगे, या आपकी चॉइस है, अगर आप में से किसी को लर्न करना कन्वीनियंट लगे, तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि the RMS value for current is 71% of the peak current I naught. इसको लर्न करने का शायद सेंस तो नहीं है ज्यादा, फॉर्मूला ही लर्न कर लीजिएगा बेहतर है. बट 71% ऑफ द पीक करंट का ये फायदा जरूर है कि अगर वो कभी एग्जाम्स के अंदर आपको करंट का ग्राफ दे दें, जैसे कि मैंने यहां दिया हुआ है, एंड इफ दे आस्क यू कि आपको इस करंट के ग्राफ के ऊपर उस आरएमएस वैल्यू को, स्टेडी वैल्यू को डायग्रामेटिकली शो करना है, तो you know that value I naught divided by under root 2, that is 1 upon under root 2, which amounted to 71% of the peak value. Just as a diagrammatic representation, you can actually construct a horizontal line at approximately 71% of the peak value. So 1 upon under root 2 का डेसिमल वर्जन याद करने का वैसे कोई फायदा नहीं है, सिवाय इसके कि अगर कभी आपको ग्राफ पे इफ दे आस्क यू कि आप आरएमएस वैल्यू को डायग्राम पे आइडेंटिफाई करके दो, सो आप अप्रोक्सीमेटली ग्राफ की जो मैक्सिमम हाइट है ना, उसके रफली 71% पर एक हॉरिजॉन्टल स्टेडी लाइन बना दोगे, then that horizontal line can be referred to as the RMS value for the actual AC supply. See? Likewise, further आगे देखते हैं. ये तो आपके पास करंट की रिप्रेजेंटेशन हो गई. सिमिलरली अब वोल्टेज की वर्किंग देख लेते हैं. Since current and voltage are proportional to each other, therefore a similar formula can also be used for alternating voltages. Hence, so exactly same principle के through, the RMS value for voltage can also be worked out. So that turns out to be V naught upon under root 2. So you know, अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे पूछा था ना कि के इलेक्ट्रिक हमें कितना वोल्टेज प्रोवाइड करती है, तो जो आपने आंसर दिया था, आपने मुझे के इलेक्ट्रिक के लिए ये आंसर दिया था जो मेरी स्क्रीन पे आ रहा था ना, 240. So that so called 240 जो आपने एक्चुअली प्रोवाइड किया था ना, ये था
RMS voltage. So if I were to now ask you, sketch the actual graph of AC supply provided to domestic consumers. So based on the formula of voltage, this is what we can do. 240 is equal to peak divided by under root 2. So the peak voltage turns out to be this time 240 multiplied by under root 2. मेरा ख्याल है सॉल्व करेंगे ना? आई एम नॉट श्योर. 311 आ जाएगा. रोहिल जरा कंफर्म प्लीज कर देना. और अगर 311 आ रहा है, उसका मतलब है इन रियलिटी हमारे घर में जो सप्लाई आती है ना, जो के इलेक्ट्रिक वाले सप्लाई हमारे घर में प्रोवाइड करते हैं, a diagrammatic representation for that supply should be kind of similar to this. So guys, can I get the result for 240 times under root 2? 339, 340, all right. So the actual graphical representation for the supply that reaches our houses should be something along these lines. That's 339. Okay, so whatever works for current, the same thing kind of works for voltage as well. And on the same graph, if I were to ask you, यार मुझे RMS की वैल्यू को भी शो करना है. So again, at approximately 70% or rather 71%, the horizontal line मैंने कोई बहुत strictly measure करके नहीं बनाई. I'm just keeping in mind कि it is 71% of the peak value. So kind of close to 3/4 of the peak value. And that is your so-called value of 240. So that turns out to be the RMS voltage. Okay, so we have seen the formula for current equation. We have seen the formula for voltage equation. We have seen how to calculate the RMS values for current and voltage. Next comes power. तीसरी चीज हो गई graphical representation for power. और फिर इसी के साथ साथ let me write this down as 3a. ग्राफ पहले बना देते हैं. And then 3b. How to calculate RMS value for power. Actually, out of all calculations that we've done so far, power key calculation is probably the most critical. And the reason for that is electricity key calculations under, essentially more often than not, we involve the use of power calculations far more often as compared to the calculations for current or for that matter for voltage. Anyways, how would the graph look like? Before I move on to the graphical representation for power, remember power is current times voltage. So as long as I have the graph of current and I have the graph of voltage, all I need to do is I just need to obtain the product. So you know current का graph और voltage का graph मैं दोनों side by side बना दूं. Since they are both in phase with each other. अच्छा मैं current के graph को red और blue combination से बना रहा हूं. So the half cycle is shown with red. The other half is shown with blue. Likewise, the same goes with voltage. Once I have these two graphs, while I'm constructing the graph ना, आप फिलहाल सिर्फ red वाले portions को देख लो. फिर बाद में blue की अलग से discussion कर लेंगे.
So I've purposely broken it down into two different fragments. How would the graph of power look like? The graph of power as a function of time. Sorry, guys. So here, if I just pay attention towards the red portions, since power is a product of current and voltage now, if I multiply the two red portions, the product works out to be of a higher value and stays positive. So the two red portions, when multiplied together, the product is going to be a much higher value in the positive quadrant. So you can mark that power as I naught times V naught, or you can refer to that as P naught. So ये आपका red वाले portion की working हो गई. If I then go for the blue portion, where both of the blue portions are negative, so product of two negative values also yields a positive answer. दोनों का जो blue वाला portion है ना, both negative, the product is again going to yield a positive answer. So ये graph भी आपका flip करके ऊपर आ जाएगा. तो power के अंदर there is going to be no negative section. Rather पूरा power का graph आपका positive section में बना हुआ होगा, as you can see. ठीक है, so if they ask you कि यार आपको power के graph को define करना है, if they ask you कि define करना है shape of the graph को, अगर पूछते हैं तो, okay, then your wording should be power varies twice between 0 and maximum during one complete cycle of current / voltage. तो अगर डिस्क्रिप्शन मांगते हैं ना तो इस तरह से लिख देना पावर वेरीज ट्वाइस बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल ऑफ करंट / voltage. If they only ask you for a graph, then the graph of power should be all in the positive quadrant. So the red portion followed by the blue portion. अब second चीज, how do we calculate the RMS value for power? तो पावर की कैलकुलेशन अब करना मुश्किल नहीं है, because we have the RMS value for current and we have the RMS value for voltage as well. So I can use these two to calculate the RMS value for power. So in this case, I'll end up getting the following result. For current, I can replace it down with the term I naught upon root 2. Likewise, for voltage, the RMS value can be replaced by this result. If you simplify, you end up getting any one of these results, जो भी फिर आपको suit करे. You can either write it down as I naught into V naught divided by 2. Alternately, this result can be referred to as V naught upon 2 or PRMS is 50% of the peak power. Which means if they ever ask you कि आपको पावर की RMS वैल्यू को ग्राफ पे शो करना है, तो पावर की RMS value, if asked to be constructed or shown on the graph, so remember for current, it was 71% of the peak current. And likewise for voltage, it was 71% of the peak voltage. For power, as you saw down below, it was 50% of the peak power.
So this is how the RMS value for power can be represented. ठीक है, so 50% of the peak power, तो ये हो जाएगा और इसके साथ लेबलिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो पावर के अंदर दो चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ग्राफ ऑफ पावर इज डिफरेंट as opposed to graph of current and voltage because they were both alternating. Power is a product, so the negative values kind of multiply and give you a positive answer. So the entire graph is shown to be existing in the positive quadrant. Secondly, the two under root functions when multiplied together, so under root 2 multiplied by under root 2 की वजह से result भी change हो जाता है. So the RMS power is just 50% of the peak power, or you can say half of the peak power, which is why that horizontal line is no longer constructed at 71% height. Rather, it is now constructed more or less at 50% height. See? रोहित ने लिखा हुआ है, can we also do this without the formula using ratios? जी बिल्कुल कर सकते हैं, हाँ हाँ। अच्छा यार, अब यार इसके अंदर एक चीज फर्दर बतानी है। ये दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन काफी स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं। Can we use the term mean current, mean voltage, mean power instead of using the entire term, that is RMS current, RMS voltage, RMS power? ठीक है, तो काफी लोगों को ये लग रहा होता है यार बस मीन कह के काम चला लेते हैं, मीन करंट, मीन वोल्टेज, मीन पावर, एज अपोज टू यूजिंग द एंटायर टर्म रूट मीन स्क्वायर करंट, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, रूट मीन स्क्वायर पावर, व्हाटएवर। सो लेट्स सी कि इसका क्या आंसर होगा। If I specifically, I'll start with current first. So if I specifically deal with the idea of current, I'm sure you would agree कि जो करंट का ग्राफ बना हुआ है ना, ये इस तरह का ग्राफ है कि जितना पोर्शन पॉजिटिव एक्सिस के अंदर है ना, जो मैंने प्लस मार्क किया है above the x axis, एग्जैक्टली उतना ही पोर्शन नेगेटिव में भी बना हुआ है below the x axis. तो टेक्निकली टेक्निकली गलती हो जाए तो अलग बात है। टेक्निकली अगर आप मीन करंट का टर्म यूज करोगे, अच्छा करंट का सिंबल आई होता है और मीन का सिंबल इज दिस ब्रैकेट। ये ब्रैकेट हमने थर्मल फिजिक्स में पढ़ा था जब हम CRMS वगैरह पढ़ते थे। सो मीन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इज डन बाय दिस ब्रैकेट। सो आई एम श्योर यू वुड अग्री, करंट के लिए अगर आप मीन वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करोगे ना, तो सिंस द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेक्शंस आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल, जितना ऊपर है उतना नीचे है, तो आई एम श्योर यू वुड अप्रिशिएट मीन करंट का आंसर 0 आ जाएगा। सो द पॉजिटिव सेक्शन एंड द नेगेटिव सेक्शन will kind of neutralize the effect of each other. सही? Hence, तो मीन का मतलब बेसिकली एवरेज होता है। सो अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का एवरेज आउट करोगे, so in this scenario, based on the symmetrical nature of the graph, the positive and the negative will kind of nullify the effect of each other. So mean, which is the average of all values of current, वो coincidentally 0 आ जाएगा। इसका मतलब है as far as current is concerned, we are not allowed to use um, the term mean current as a replacement for the term RMS current. So at least current के लिए it doesn't work. Likewise, for voltage,
सेम जस्टिफिकेशन. सो वोल्टेज के लिए भी, since the graph follows the shape of current, the observation stays the same. So मैं दोबारा वोल्टेज के लिए भी लिख देता हूं. As far as current and voltage are concerned ना, इसके लिए तो it is advisable कि आप पूरा टर्म लिखा करो. तो मैं इसको नोट करके पहले लिखता हूं. For current and voltage, we prefer to use the term IRMS and VRMS instead of mean current and mean voltage. However, in case of power, there won't be an issue. So if I ask you कि आपको मीन पावर निकालना है, ये जीरो नहीं होगा जाहिर है. And the mean power or the average power will be peak power divided by 2, which is the same thing as the RMS power. तो पावर के केस में आपकी बचत हो जाती है क्योंकि पावर वाला ग्राफ was not above and below the axis. The entire graph of power was above the x-axis. So mean, which is the average value, is going to be half the peak value. So in case of power, there won't be an issue. Hence, the two terms can be used interchangeably. ठीक है. So power के केस के अंदर you don't need to be that particular. RMS लिख दो, mean power लिख दो, it's fine because the entire graph is above the x-axis. जो प्रॉब्लम करंट और वोल्टेज के साथ हो रहा था कि आधा ग्राफ ऊपर था आधा ग्राफ नीचे था, सो मीन का टर्म इतना सेंसिबल नहीं था बिकॉज द मीन वैल्यू टर्न्ड आउट टू बी जीरो. दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम डज नॉट अराइज विद पावर. सो पावर के केस के अंदर यस यू कैन यूज द टर्म्स जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. नाउ एक्सटेंडिंग दिस आइडिया फर्दर, यार अगर सपोज करें कि आपको क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन गिवन हो, एक रैंडम सा क्वेश्चन बना देता हूँ कि इमेजिन इफ there is a resistor given to you. This resistor is of 1.5 kilo ohms. This resistor is connected to an AC supply. And the voltage of the AC supply is given to us as follows. The diagram shows you an AC supply connected to a resistor whose value is 1.5 kilo ohms. The AC supply follows the voltage equation. V is equal to 200 sine 30 pi into T. So the equation of the voltage and the value of the resistor is given to you. If you are asked कि आपको ये सारी चीजें फाइंड करनी है, इमेजिन करें फर्स्ट पार्ट में यू आर आस्क्ड कि आपको पीक वोल्टेज निकालना है. सेकंड पार्ट के अंदर मीन वोल्टेज. थर्ड पार्ट के अंदर आरएमएस वोल्टेज. फोर्थ पार्ट के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई.
time period of the AC supply, peak power, mean power. इसकी जगह पर if you want you can even write down RMS power. It's the same. और फिर last part में suggest what happens to P naught. पूरा लिख देता हूँ. Suggest what happens to peak power if the frequency of the AC supply is doubled. So, ये सारे के सारे parts की calculation can be simply based on the fact. So, मैं लिखता जा रहा हूँ, पहले आप देख लीजिएगा. सबसे पहले तो let's compare this equation with the standard equation that we did earlier on in today's class. I'll just write down the equation and I'll quickly show you which equation am I referring to. मैं term by term जरा comparison के लिए circles बना रहा हूँ, वो आप देख लें. ठीक है, so I've written down the standard equation which is V is equal to V naught sin omega t और मैंने terms को compare करने के लिए list कर दिया है. अब अगर आप symbols की terms में देखते जाएं, peak voltage is V naught, so that should be 200. Mean voltage, since it's a sine function, so 0. Since it's a sine function, jitna above, utna below, so 0. RMS voltage, so based on the formula V naught upon under root 2, तो ये result आ जाएगा. Simplify करना हो तो बाद में कर लीजिएगा. मुझे नहीं चाहिए तो मैं simplify नहीं कर रहा. Then frequency of the AC supply. So omega is equal to 2 pi f. SHM का formula use कर रहा हूँ. Omega is equal to 2 pi f. So frequency will be, I think 15 hertz. ये जरा check कर लो. ठीक है, मेरा ख्याल है 15 आ जाएगी. And then the time period. Peak power. अब I'm sure you would agree. मैं लिख कैसे रहा हूँ वो देख लीजिएगा. Peak power. Symbols देख लो. आप एक कॉमन क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं, सर व्हाई डिडंट यू यूज P is equal to IV? तो आई गेस ऑब्वियस आंसर है ना कि मेरे पास वोल्टेज अवेलेबल है और मेरे पास रेजिस्टेंस अवेलेबल है. तो 3 फॉर्मूलाज पावर के होते थे. आप कौन सा यूज करेंगे वो आप सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड कर लेना. तो ये तीनों अवेलेबल थे. आई वेंट विद द थर्ड वन बेस्ड ऑन हाउ द इक्वेशन वाज फॉर्मुलेटेड फॉर मी. वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस वर बोथ अवेलेबल ना, सो हेंस आई वेंट विद द थर्ड वन. लिखा कैसे वो देख लीजिएगा प्लीज. तो अवॉइड राइटिंग इट डाउन जस्ट एज P is equal to V square upon R. पीक पावर लिखा है तो जरा एडजस्टमेंट देख लीजिएगा किस फॉर्म में लिखी हुई है. If you apply the numbers, you'll end up getting this answer. 200 square. Resistance is 1500. I think मुझे इसका आंसर दे दो. I might need this answer for the next part. तो रोहिल यार जरा देख, अगर कैलकुलेटर है तो मुझे इसका बेटा एक आंसर दे दे. And while he is giving me the answer for this working now, या अली अगर दे देगा तो तब तक बाकी लोग नेक्स्ट वाली वर्किंग को देख लो, which is the mean power slash the RMS power. So इसका फॉर्मूला P RMS
2 फ़ॉर्मूलाज़ हैं जो भी आपको सूट करे। डायरेक्ट करते हैं तो ऐसे कर लीजिएगा 50% ऑफ द पीक पावर। ओके, सो इसका आंसर आ रहा था 26.6 लिख देता हूँ। हाफ करेंगे तो 13.3 हो जाएगा। सो इफ इट वर्क्स आउट फॉर यू, ये बिल्कुल सही है। तो अगर आपको फर्स्ट वाला सही लगता है तरीका तो ये यूज़ कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये भी सही है। दोनों इक्वली करेक्ट है, जैसे आपको मुनासिब लगे। सिंबल ज़रा देख लीजिएगा। ठीक है, so if you go for the shorter version, as long as you remember it was 50% of the peak power, you end up getting 13.3, 50% of the peak power. And if you go for the entire version, then 13.3 as well. Last वाले part में suggest what happens to the peak power if the frequency of the AC supply gets doubled. Now note कीजिएगा, अगर आप frequency को double करोगे ना, अगर आप frequency को double करोगे, तो आपकी equation में जो term change करेगा ना, मैं उसको highlight कर रहा हूँ with the yellow marker. Changing the frequency or doubling the frequency rather is going to make this value of 30 pi change into 60 pi. So that number is surely going to get affected. The question was asking you, okay, what will happen to peak power? Notice carefully, peak power has got nothing to do with this number which I've highlighted with the yellow marker. Peak power depends on 200 square divided by 1500. So peak power depends on the pink circle. It does not depend on the green circle. Okay, so peak power depends on the pink circle. It does not depend on the green circle. Hence, your peak power should remain unchanged in simple terms. So मैं इसको wordings की form में लिख लेता हूँ. So if frequency doubles, then omega doubles. So basically, the number 30 pi changes to become 60 pi. However, this change will not influence peak power, as peak power depends on peak voltage, not on omega. सही है? तो ये तो सारे आंसर्स हो गए बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन जो मुझे बतानी थी. ओके, अब मुझे जो आगे की वर्किंग करनी है, 5 मिनट्स रुक के कराता हूँ. देख लूँ मुझे इसमें से कुछ मिटाना तो नहीं है. नहीं, आई थिंक मिटाने की ज़रूरत नहीं है. मैं इसको साथ-साथ अपलोड भी कर दूँगा. मुझे 5 मिनट देना. अ, अब क्या करूँगा? यार मैं शेयर करता हूँ. मुझे बाद में ख़्याल आया कि मैंने एक ही पेज पे बहुत ज़्यादा लिख दिया. रोहिल, तुम लोग यार ज़रा चेक कर सकते हो ना? मुझे 1 सेकंड चेक करके बता दो कितना पोर्शन नीचे से कट रहा है. सो 1 सेकंड ना, लेट मी जस्ट अपलोड इट बिकॉज़ मुझे बाद में ख़्याल आया कि मैं एक ही पेज को स्ट्रेच करता हुआ आगे चला गया था.
सुरोहिल जरा गूगल क्लासरूम पे जाके मुझे बताओ कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा। ताकि उसका फिर कुछ कर लूं बिफोर आई प्रोसीड ऑन टू द नेक्स्ट पेज। अली जरा तुम भी जाके चेक कर लो, सेलफोन पे ही देख लो। हाँ गाइस, आई एम वेटिंग फॉर यू। तो तुम लोग जरा देख लो कि अगर गूगल क्लासरूम पे अपलोड हुआ है। मैं ऑडियो ऑन कर देता हूँ यार तुम लोगों का। रोहिल तुम्हारा ऑडियो ऑन, एक सेकेंड ना रोहिल। आपको मैंने अनम्यूट करने के लिए वो किया हुआ है, तो रोहिल अपने आप को पहले जरा अनम्यूट कर दो। फरमाओ। Sir, just the last part. अच्छा, बाय द लास्ट पार्ट रोहिल यू मीन दिस क्वेश्चन इज द ओनली क्वेश्चन जो नजर नहीं आ रहा ना? Yes. इसके ऊपर का सारा काम आ गया ना, लाइक इंटरचेंजेबली तक जो From लिखा हुआ आ रहा है। sir, from suggest what happened to the last thing. ओ अच्छा अच्छा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन भी मोर देन हाफ आ चुका है। Yes. ऑलराइट, सो एक सेकेंड है। ठीक है, ये फिर मैं अलग से अपलोड कर दूंगा। एंड एक दो मिनट रुक जाऊं, फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ यार। तो गाइस आई एम टेकिंग अ 5 मिनट ब्रेक, फिर स्टार्ट करता हूँ। बल्कि यार मीन वाले काम कर लो ना तुम लोग। ये लास्ट वाला पार्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि रोहित ने लिखा है ना, मैंने भी नोटिस किया, सिर्फ सजेस्ट वाला पार्ट नहीं आया है। तो गाइस मैं काम करता हूँ, एक सेकेंड ना। एक सेकेंड है यार। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे ओके कर दो वंस यू आर डन विद द स्क्रीनशॉट। आई थिंक फिर इसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट द लास्ट पार्ट। हाँ रोहिल, ऐसे कर लेना, जस्ट अपलोड इट ऑन योर ड्राइव, सही है। डिड यू मिस आउट एनी क्लासेस रोहिल? आई डोंट थिंक सो, या शायद एक आध क्लास तुमने पहले मिस करी थी। बाकी तो आई थिंक तुम्हारे पास सारा काम होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। ऑल राइट रोहिल, सही है। सो गाइस एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा सिगरेट खत्म कर लूं, फिर स्टार्ट करता हूँ यार। आई डोंट नो तुम लोगों में से किसी ने क्रिकेट फॉलो करी या नहीं। आई वाज जस्ट हैप्पी टू सी इंडिया ऑल आउट फॉर 30 समथिंग, आई थिंक 35 या पता नहीं कितने रन्स। आई वाज अमेज्ड। सुबह में मैंने सेल फोन पे चेक किया तो आई वाज लाइक यार ये कैसे हो सकता है। देन आई लुक्ड एट द स्कोर कार्ड।
बिकॉज एट वन पॉइंट आई थॉट कि ऑस्ट्रेलिया इज इन ट्रबल। पता नहीं आप लोगों ने वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच फॉलो किया था कि नहीं। अच्छा, रोहेल ने फॉलो किया है। खैर हमारी टीम के भी बुरे हालात हैं। मुझे लग रहा है T20 तो हम लोग 2-1, हो सकता है 3-0 ही हार जाए। ऑलराइट, थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन बच गया, वो डिस्कस कर लेते हैं। एक्चुअली आई डोंट नो क्यों वन नोट में कभी कभी बहुत ही खराब सा ग्लिच आ जाता है। अब ये काफी ट्रबल दे रहा होता है। मैंने लास्ट टाइम भी शायद तुम लोगों को कहा था। वो आई थिंक रिहा की मुझे बददुआ लगी है। अ, वो जितने नोट्स कंपाइल हुए थे ना, अभी तक मुझे टाइम नहीं मिल सका यार उनको दोबारा रिकम्पाइल करने का। सो यार दिस इज स्लाइड 2। तो दिस इज दो चीजें अभी बाकी जो रह गई है ना, उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। सो हाउ टू कैलकुलेट RMS values for supply other than AC supply. So, if the graph given to you does not resemble the shape of an alternating current, AC supply wala sine wave agar nahi ho, to phir how can we calculate RMS values for current or voltage or whatever? So let me give you a few examples to work around with. 3 examples कराने फिर conclude कर दूंगा. तो as a first case, imagine करें कि अगर आपको current against time का graph दिया हुआ है and the shape as you would see in a while does not resemble that of an AC supply. Rather, suppose करें इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है. So the peak value on one side is 9 amperes and the peak value on the other side is -3. अब यार ये एग्जामिनर की चॉइस है. अगर वो आपको AC सप्लाई दे दे जो 90% ऑफ द टाइम्स देते हैं, तब तो जो फॉर्मूलाज हमने प्रीवियस स्लाइड पे किए थे ना, आप उसको यूज करके अपना काम चला लीजिएगा. बट कभी कभी ऑन एंड ऑफ वो आपको सप्लाई चेंज करके दे देते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये वाली सप्लाई दी हुई है which is not an AC supply. तो फिर इस केस के अंदर how can we calculate the RMS value? So मैं एक्सेस से पहले आपको लेबलिंग बता दूं. So capital T for the time period and this is T upon 2. Okay, so यार AC सप्लाई के लिए तो we had a formula, जो formulas हमने लिखे हुए थे on the previous slide. But those formulas were only for alternating current. If you get any graph other than alternating current, like for example, ये एक example 1 हो गया, फिर ऐसे ही 2 एग्जांपल्स और भी देने हैं, तो फिर इन केसेस के अंदर हम वो प्रीवियस वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते. तो फिर अब इसके अंदर हाउ टू कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू. सिंस द टर्म आरएमएस स्टैंड्स फॉर रूट मीन स्क्वायर, पहला काम ये कीजिएगा, मैं 1 2 और 3 लिख देता हूँ ताकि आप रिकॉग्नाइज कर ले कि इफ एनी सप्लाई अदर देन एसी सप्लाई इज गिवन टू यू, देन हाउ डू वी कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू. पहला काम,
आप अपने ग्राफ का स्क्वायर कर लीजिएगा। इन केस इफ यू वंडरिंग ना कि ग्राफ का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो वर्टिकल एक्सिस पे मैं आई स्क्वायर लिख देता हूँ। द वैल्यू ऑफ 9 ये आपकी राइज करके 81 पे चली जाएगी। थोड़ा बड़ा करके बना दो। तो जो 9 की वैल्यू है ना वो आपकी स्क्वायर करके 81 पे चली जाएगी। ये पहला स्टेप है, स्क्वायर कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग अ, तीनों स्टेप्स को डायरेक्ट कर लेते हैं, और अगर आप चेक करेंगे ना तो इन अ व्हाइल यू विल सी तीनों स्टेप्स को डायरेक्ट करना बहुत आसान है। बट नॉनदलेस मैं स्टेप वाइज करा रहा हूँ। तो पहले सिर्फ स्क्वायर कर लीजिएगा। मैं जो स्क्वायर दिखा रहा हूँ ना वो जरा आप देख लें पहले। स्क्वायर करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 हो गया, और -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये पहला स्टेप हो गया, स्क्वायर का काम हो गया। अब स्क्वायर करने के बाद मीन निकालना है। तो मीन निकालने का तरीका होता है ग्राफिकली, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो पहले स्क्वायर किया, 9 की वैल्यू बिकम्स 81, -3 बिकम्स 9। ये पहला स्टेप हो गया, स्क्वायर हो गया। अब मीन कर रहे हैं। सो मीन बन जाएगा टोटल एरिया, आई एम शेडिंग द एरिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। Total area will be 81 times t upon 2 plus 9 times t upon 2. This will be the total area of the shaded region divided by total time. अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, should I write 45? Is that right? And this is the answer for 45। जरा कंफर्म कर लेना। 45 जरा कंफर्म कर लेना। यस, ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गया कि पहले आपने स्क्वायर किया, फिर आपने मीन निकाल लिया। ये स्टेप 1 है। ये आपका स्टेप 2 हो गया। मीन निकालने का मतलब टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। दो स्टेप्स हो गए, मीन ऑफ आई स्क्वायर। तो पहले करंट को स्क्वायर किया था, फिर इसका मीन निकाल लिया। अब तीसरा स्टेप, तो फाइनली इसका रूट कर दीजिएगा। तो ये जो आंसर आएगा ना स्क्वायर रूट करने के बाद, दिस विल बी रेफर्ड टू एज द आरएमएस वैल्यू फॉर करंट। किसी ने स्क्वायर रूट कर लिया हो तो जरा मुझे आंसर दे दीजिएगा। आई थिंक 6.8 और समथिंग, 6.7 कर देता हूँ। ठीक है, तो एसी सप्लाई के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बिकॉज एसी सप्लाई के लिए इट्स काइंड ऑफ एक स्टैंडर्डाइज्ड इक्वेशन है, जिसमें ये सारा प्रोसेस खुद से हुआ है। सो एवरीथिंग विच आई हैव शोन यू राइट नाउ, स्टेप 1, 2 एंड 3, स्क्वायरिंग करना, फिर मीन करना, फिर फाइनली रूट कर देना, ये तीनों स्टेप्स करने के बाद एसी सप्लाई का आंसर जो आया था वो हम लोगों ने प्रीवियस वाली स्लाइड पे देखा था, विच वाज आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2। तो
अदर देन एसी सप्लाई अगर हो ना कोई ग्राफ, तो फिर आपको ये स्टेप्स थोड़े से खुद करने पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, जरा दोबारा देख लीजिएगा। और मेरी इंटेंशन ये है कि अगर हो सके तो आप तीनों स्टेप्स को मेंटली कर लीजिएगा, नहीं हो सकता है तो अलग अलग कर लीजिएगा। तो पहले स्टेप में स्क्वायर किया, सेकेंड स्टेप में मीन निकाला, मीन इज टोटल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और लास्ट स्टेप में अपने सेकेंड स्टेप के आंसर को अंडर रूट कर दिया। तो अब इसी बेसिस पे इफ आई आस्क यू कि जरा एग्जैक्टली यही काम इसके साथ करें। अगर आप में से कोई डायरेक्ट कर सकता है तो फेयर इनफ, और अगर नहीं कर सकता तो कोई इशू नहीं है, मेरे साथ साथ फॉलो कर लीजिएगा। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा वैसे कर लीजिएगा। तो पहला स्टेप स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे। ये काम मेंटली हो सकता है, वैसे ना करना चाहें तो मेरे साथ फॉलो कर लीजिएगा। 15 का स्क्वायर इज 225, एंड कोइंसिडेंटली -15 का स्क्वायर is also 225. So it kind of becomes somewhat like a box. So 15 square gives you 225, and -15 square also gives you 225. ये तो पहला स्टेप हो गया। अब सेकंड स्टेप में आपको मीन निकालना है। दैट्स टोटल एरिया। नोट करें, मेंटली हो जरूर सकता था, और शायद किसी ने आंसर लिख भी दिया हो स्क्रीन पर। टोटल टाइम, total area, basically the area of one large rectangle divided by total time. Answer that you're getting right now. This is the answer for mean of v square. Second step is done. Up third step, to obtain RMS, square root answer of part 2. So voltage का RMS answer इतना आ रहा है। Back to 15. अब कैन यू रियलाइज इसके लिए भी शॉर्टकट बन गया। सो प्लीज देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर 2 के लिए शॉर्टकट आप ऐसे लर्न कर सकते हो। आप एग्जाम्पल 2 के ग्राफ को देखें, और मैं नीचे इसका कंक्लूजन लिखता हूं। If we have a square wave ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। इफ वी हैव अ स्क्वायर वेव, सो अगर आप डायग्राम देखें ना, आई एम रेफरिंग टू द टर्म स्क्वायर वेव। मैं इसको कह रहा हूँ, ठीक है। इफ वी हैव अ स्क्वायर वेव, then the RMS value becomes the same as the peak value.
इसको एक जनरल फॉर्मूला बना के याद रख लेना, ताकि आपको एग्जाम में इसकी वर्किंग ना करनी पड़े। ठीक है, सो लॉन्ग एज इट्स अ स्क्वायर वेव, स्क्वायर का मतलब है द पॉजिटिव पीक 15 and the negative peak minus 15, they must both be identical to each other. So if you have a square waveform, then you can remember this statement directly as a general formula that Vrms, even for current, you'll end up getting the same result, is equal to V naught. ठीक है गाइस, तो अगर को तो स्क्वायर वेव हो तो आप डायरेक्टली लर्न करके काम चला लीजिएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल 2 हो गया। एग्जाम्पल 1 में अनफॉर्चुनेटली कैलकुलेट करना पड़ा था बिकॉज इट वाज नॉट अ स्क्वायर वेव। लुक केयरफुली, ना द पॉजिटिव पीक एंड द नेगेटिव पीक वर नॉट आइडेंटिकल। सो इसमें अनफॉर्चुनेटली करना पड़ा था एग्जाम्पल 1 के अंदर, बट एग्जाम्पल 2 में आपकी बचत हो जाएगी because the positive and the negative peak are identical, hence the term square wave. So example 2 में as you can see, if it's a square waveform, तो फिर आप डायरेक्टली काम चला लीजिएगा by just remembering the last statement, that is Vrms is equal to V naught. और एक फाइनल क्वेश्चन, अच्छा इस एग्जाम्पल 3 में भी कोई शॉर्टकट नहीं है, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो सिर्फ एग्जाम्पल 2 के अंदर आपके पास शॉर्टकट तरीका अवेलेबल था। सो ओनली इफ इट्स अ स्क्वायर वेव then we can actually directly come up with the answer, वरना फिर ये है कि तीनों स्टेप्स की वर्किंग कीजिएगा। ये भी एक एग्जांपल देख लें, ये करा के फिर कंक्लूड करता हूँ। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ करंट इज 4 amperes. It lasts for t upon 3, 1/3 of the time period. And the negative value goes down to -20, and that value lasts for the remaining time. ठीक है, अगेन यू आर आस्क्ड कि आपको आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करनी है। So इसका भी कोई शॉर्टकट नहीं है, because this cannot be classified as a square wave. तो वही काम कीजिएगा, पहले स्टेप के अंदर स्क्वायरिंग कर देते हैं। फोर का स्क्वायर 16 आ जाएगा, which will last for t upon 3. -20 का स्क्वायर will take it all the way up to +400. अच्छा, नेक्स्ट क्लास है मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बस 3-4 क्वेश्चंस कराने हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है कराना। वो कराने के बाद फिर इंशाल्लाह मैं क्वांटम फिजिक्स की वर्किंग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करा दूंगा। ये आपके स्क्वायरिंग का काम हो गया। सो 4 की वैल्यू टेक्स यू टू 16। If you can do it mentally do that please and skip my working. And the -20 takes you all the way up to 400. अब second step, अब मीन कैलकुलेट करना है ऑफ I square. That was the total area divided by the total time. So 16 times t upon 3 plus 400 times 2t upon 3, that's the total area, divided by total time.
ये मेरे सेकंड स्टेप का आंसर आ जाएगा। इफ एनीबडी वुड 272। अच्छा, सेकंड स्टेप का पूरा नाम बस याद रखिएगा। हुसैन ने 272 सही लिखा है, व्हिच इज ओके, बट द जस्ट रिमेंबर द नेम कि इट इज द मीन ऑफ आई स्क्वायर। ठीक है, रादर देन जस्ट कॉलिंग इट एज मीन, क्योंकि हमने पहले स्क्वायर किया हुआ है ना और फिर मीन निकाला है, सो दैट शुड बी रिफर्ड टू एज मीन ऑफ आई स्क्वायर। और थर्ड स्टेटमेंट, रूट मीन स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर रूट करना है, so that turns out to be 16.5. Thank you. सही, सो टू फॉर्मूलाज टू बी रिमेंबर्ड। अगर साइन का फंक्शन है ना, तो जो स्लाइड 1 पे काम किया था ना, उसके फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, दैट √2 वाला फॉर्मूला। और अगर स्क्वायर वेव फॉर्म है, तो स्क्वायर वेव फॉर्म के लिए जो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये यूज कर लीजिएगा। बट अगर कोई और अलग से ग्राफ दिया हुआ हो, समथिंग लाइक एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 3, then remember to go through the 3 steps or do all the 3 steps in one go, whatever suits you, to work out the answer for either RMS current or RMS voltage. The next class I need to do just a few questions of this, and next class ke andar hi I'm hoping to start with the working of quantum physics. ठीक है guys, so मेरा ख्याल है मैं यहाँ पर इसको ओवर कर रहा हूँ।